नमस्कार मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी की जो कहानी है उस कहानी में मैं आपको आगे ले जाने वाली हूँ। हमने लास्ट में देखा था कि जो लाखा बंजारा था उसे अपने व्यापार में बहुत खोट होती है, भारी नुकसान होता है। तब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक सेठ के यहाँ जाता है, लेकिन सेठ उसे पैसे देने के पहले एक शर्त रखता है, कुछ चीज़ गिरवी रखने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे बंजारे के पास कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है कि आप अगर मेरी ज़बान पे विश्वास रखो तो आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको 1 साल में सूद सहित यानी कि ब्याज सहित मैं आपको वापस कर दूँगा। तो क्या सेठ उसको रकम देगा? इसमें कुत्ता क्या अपना रोल निभाएगा, वह इस कहानी में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो कहानी आगे चलती है। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूँगा। क्या होता है देखिए। सेठे કહ્યું, કોઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે આ કૂતરો તો છે તો તું એને જ જામીન તરીકે આપી દે। જ્યારે તું બધા રૂપિયા પાછા આપીશ ત્યારે હું તને કૂતરો પાછો આપી દઈશ। બરાબર? શું કહે છે કે જ્યારે તારી પાસે કંઈ નથી તો વાંધો નહીં, પરંતુ તારી પાસે આ કૂતરો જે છે એ તું મને જામીન રૂપે આપી જા। બરાબર? અને જ્યારે તું તારા બધા પૈસા મને પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું તને તારો કૂતરો પણ તને પાછો આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, क्योंकि वो हर जगह उसकी रक्षा करता था, उसका ध्यान रखता था। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। क्या होता है कि पैसा आपीने एनी पासेथी ए चाल्यो जाए छे। लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूँगा। बंजारे को दुख तो हुआ परंतु कुत्ते को देने में मगर कोई चारा न था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। बराबर? क्या होता है कि थोड़ा दिवसों बीत्या तो શું થાય છે, એક વખત શેઠને ત્યાં ચોરી થઈ। કૂતરાએ ચોરોનો પીછો કર્યો। દૂર સુધી જંગલમાં જઈને ચોરોને બધો માલ સામાન જમીનમાં દાટી દીધો અને ત્યાંથી રફુ ચક્કર થઈ ગઈ। કૂતરો પાછો આવ્યો અને ભસીને શેઠને બતાવવા લાગ્યો કે લૂંટારા આપની દુકાન તોડીને માલ ઉપાડી ગયા છે। फिर क्या होता है? सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। देखिए कुत्ते की कितनी समझदारी है। वो क्या करता है, सेठ को तो पहले तो वो उनको उठाता है और उनको सारी बात अपने इशारे में बताता है। फिर सेठ चीज़ नहीं समझते तो क्या करता है, उनकी जो धोती थी वो खींचने लगता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। શું થાય છે કે જે કૂતરો છે એ શેઠનું ધોતિયું પકડીને આગળ ખેંચવા લાગે છે। શેઠ કૂતરાની પાછળ ચાલવા લાગે। જ્યાં ચોરોએ માલ સામાન સંતાડ્યો હતો ત્યાં જઈને કૂતરો પોતાના પગથી માટી ખોદવા लाग्यो અને થોડું ખોદતા જ બધો સામાન દેખાવા લાગ્યો। બરાબર? सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा। बराबर? શું કરે છે, શેઠજી જે તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને કૂતરાને પ્રેમથી થાબડવા લાગ્યા। કૂતરાની વફાદારીથી તે મુગ્ધ થઈ ગયા। ઘેર જઈને તેમણે એક ચિઠ્ઠી લખીને કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં બાંધી દીધી અને પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરીને કહ્યું, क्या कहते हैं कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भागने लगा।
કૂતરા ભાઈ, તમે તમારા માલિક વણજારાની પાસે જાઓ, તમે મુક્ત છો. કૂતરો ખુશ થઈને એને પોતાના માલિકને મળવા માટે દોડ્યો. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. બરાબર. અને એક તરફ શું થાય છે કે લાખો વણજારો પણ એને જે નુકસાન થયું હતું એની બધી ભરપાઈ થઈ જાય છે અને ખૂબ પૈસા કમાય છે. અને શેઠના બધા પૈસા તે એને આપવા માટે એ જ રસ્તેથી જઈ રહ્યો હોય છે. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा, लेकिन क्या होता है, वह नाराज हो गया. सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यानी कि कुत्ते ने जो मैंने वचन दिया था वह तोड़ दिया है और वो वहाँ से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है. उसने बेवफाई की है, यानी कि मेरा वचन तोड़ा है उसने, और मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा. અને શેઠ મારી પર ગુસ્સે થશે. એને મતલબ કે શું છે કે એને ગલતફહેમી થઈ જાય છે. उसने आव न देखा ताव, यानी એને કશું જ જોયું નહીં અને ગુસ્સે ભરાઈને બસ કુત્તે કે માથે પર લાઠી કા પ્રહાર કર દિયા. અને એને કંઈ જોયું નહીં. એની પાસે એની જે લાકડી હોય છે તેનાથી શું કરે છે, કૂતરાના માથા પર વાર કરી દે છે. કુત્તા બેહોશ હોકર ગીર પડા. કૂતરો એના માથા પર, કોઈ બી જાનવર હોય છે એનું જે માથાનો જે ભાગ હોય છે એ ખૂબ નાજુક હોય છે. बराबर. તે કૂતરો પણ બેહોશ થઈને ત્યાં પડી જાય છે. લાખા ને દેખા કે કુત્તે કે ગલે में एक चिट्ठी बंधी है. उसने उसे खोल कर पढ़ा. શું થાય છે કે લાખો જ્યારે કૂતરો નીચે પડી જાય છે ત્યારે લાખો એના ગળામાં ચિઠ્ઠી જુએ છે, એને જ खोलीने वाँचे छे. लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ. જુઓ શું થાય છે, ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હોય છે કે લાખા, તારા કૂતરાએ મને તારા વ્યાજ સહિત બધા પૈસા મને ચૂકવી દીધા છે, તેથી હું તેને મુક્ત કરી રહ્યો છું. उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है. खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त कर दिया है. लाखा तो चकित हो गया. वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया. वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. लेकिन अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत. મતલબ કે લાખો જે છે એ ખૂબ એને જોઈને એને ખૂબ પસ્તાવો છે, એને રડવા માંડે છે, પરંતુ ત્યાં સુધી તો કૂતરાના પ્રાણ નીકળી ગયા હોય છે અને એને પોતાના કરવા પર ખૂબ પસ્તાવો થાય છે. પરંતુ હવે પસ્તાવાથી કંઈ થશે નહીં, કેમ કે પ્રાણ એક વખત બહાર નીકળી જાય પછી એ શરીરમાં કદી દાખલ થતા નથી. બરાબર. પછી શું થાય છે, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई. તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी का कथा संसार को सुना रही है. बराबर. जो कदाच તમે જો પાટણ જાઓ તો જરૂર આની મુલાકાત લેશો. બરાબર. ત્યાંના ગામડાના લોકોને એ પણ ખબર હશે, કેમ કે આ સમાધિ એની સાબિતી રૂપ છે એ કૂતરાની વફાદારીની. બરાબર. એક જાનવર થઈને એ પોતાની વફાદારી, પોતાનું જે કર્મ છે એ પોતે ईमानदारी निभावे છે. तो बच्चों, इसके शब्दार्थ हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. समाधि यानी कि स्मारक, यानी कि एक ऐसी सीमेंट से, ईंट से तैयार की जाती है और वहाँ पर जो मृत्यु पाने वाला जो कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो अस्थियाँ होती है वहाँ पे रखी जाती हैं. वफादार यानी स्वामी भक्त. बंजारा एक विचरती जाति. बंजारा यानी कि जो विचरती जाति, एक विचरती मतलब कि विचरण करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, उनको बंजारा कहते हैं. पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, यानी कि जैसे कि हम यात्रा कर रहे हैं तो कहीं पे भी अपने तंबू टेंट लगाकर हम वहाँ पर रह सकते हैं. लादना, किसी के ऊपर वस्तु रखते जाना. लुटेरा, कोई भी चीज़ लूटने वाला, आप उसको डाकू भी कह सकते हो. मिश्री यानी कि चीनी या शक्कर, यानी તમે ખાંડ કહો છો. लौटना, वापस आना. मुग्ध यानी कि आसक्त हो जाना, मोहित हो जाना. सूद यानी कि ब्याज या व्याज તમે જેને કહો છો. જેમ કે 100 રૂપિયા હોય તેની પર 2% વ્યાજ લગાવે, યાनी कि 100 રૂપિયા તમે અગર કોઈ તમને આપે છે તો જ્યારે તમે એને રિટર્ન કરો તો તમારે 100 રૂપિયાની સાથે, મૂળ કિંમતની સાથે 2 રૂપિયા વ્યાજ સહિત 102 રૂપિયા આપવાના હોય છે. ગોદ એટલે કે આંચલ. ખોડો ગુજરાતી શબ્દ છે. ચલીએ.
तो यहाँ पे शब्दार्थ समाप्त होता है। हाँ, असाइनमेंट नंबर 2 में मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। चलिए, तो असाइनमेंट सॉल्यूशन के इंतज़ार में। धन्यवाद।